Good morning students. So today we are discussing about the next equation of exercise 4.1. We have seen this equation number 4. In that we have seen the equation to find the adjoint of a matrix. Now today we are going to discuss how to find out the inverse of a matrix. Now students, as you know that from the matrices method of finding the inverse of matrix using the property is reduced from this year. Okay, it is reduced from your syllabus. So, but in the determinant chapter, the property is not there, but finding inverse using the formula A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. ये वाली फॉर्मूला से जो इनवर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है वो हमारे सिलेबस में आएंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी द इक्वेशन ऑफ दिस थिंग एंड दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर दिस चैप्टर, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. सो लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 5. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, दैट इज व्हेन द इनवर्स एग्जिस्ट. तो स्टूडेंट्स, हमने एक थियरम देखा था, इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन एंड ओनली देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. ऐसा हमने देखा था, दैट इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या आपको लिखा है, जैसे डेफिनेशन वी हैव सीन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर? That is, determinant of A is not equals to 0. तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो पहले आपको चेक करना होगा कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है. इफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो लेट मी स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इज 2x2 मैट्रिक्स, और 2x2 का आपको पता ही है एडजॉइंट फाइंड करना बहुत इजी मेथड है वहां पे. So A is equals to this. Now let me find out the determinant of A. So determinant of A, you know that first multiply the principal diagonal. So 3 2s are 6 minus 4 into minus 2 minus 8, that is plus 14. As plus 14 is not equals to 0. ये चेक करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि पहले determinant of A चेक करिए. If it is non-zero, that means your inverse is exist. तो जो हमारा मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड इट कैन बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला. So A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So let me find out adjoint of A. तो आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स है तो adjoint फाइंड करना बहुत इजी होता है. फर्स्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज. तो ये क्या है 2 3, तो उसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2, एंड जो सबस्क्रिप्ट डायगोनल है उसका होगा नेगेटिव, मतलब कि यहाँ -2 है तो ये +2 होगा, एंड हियर 4 सो इट इज -2. सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, 3 2 -4 and 2. एंड नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? A upon determinant of A into adjoint of A. So 1 upon 14, 3 2 -4 2. सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करिए. यू कैन सी हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30. दिस वैल्यू इज नॉन जीरो, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. उसके बाद का स्टेप होगा आपका टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. सो एडजॉइंट ऑफ ए अगेन दिस इज 2x2 मैट्रिक्स. So interchange the principal diagonal. तो यहाँ पे -1 2 है, we have written 2 -1, and the subscript diagonal will be negative. So 5 here -5 -3, so +3, and this is your A inverse. A inverse के फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 upon determinant of A into adjoint of A. So this is the method to find inverse of 2x2 matrix. Now next equation is 7 8 9 10 and 11. In this 5 equation we have to find out the inverse of 3x3 matrix. Okay, so here we will solve any 3 equation and another 2 you can do by yourself.
So I am going to discuss question number 7, then question number 7, then 9 and 11. Two questions 8 and 9, 8 and 10 I am giving to you for the solution. Okay, so let us see question number 7. So student, question number 7. So again the same procedure we will follow. First we will find out the determinant of A. So determinant of A find करने के लिए आपको क्या करना होगा? Just observe the row or the column where the maximum number of zero is there. So here you can see there are 2 zeros in the first column as well as in the third row. So you can use any of this. I have find using the first row. First column का अगर बात करें तो 1 into the determinant. Okay, so we can find out here determinant of 1 into the determinant. डिलीट करके देख लीजिए आप 2, 4, 0 and 5. तो क्या होगा? 5 2s are 10 minus 0. So 10 minus 0 that is equals to 10, which is not equals to 0. Therefore A inverse exists. Now students, adjoint of A. तो adjoint of A क्या होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32 and A33. So this is the adjoint of A. अगर ये फाइंड करना है आपको तो A11 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? So I have written here 1 2 3 0 2 4 0 0 5. Now till the last question हम क्या कर रहे थे? तो हम A11, A12, A13 differently find करें. Now here what we will do? A11 find करना है मतलब ये वाला एलिमेंट होगा. So we will write down directly. So row and column is needed. तो हमारे पास बचा क्या है? 2 4 and 0 5. So क्या होगा? 10 minus 0 डायरेक्टली कंसीडर 10 minus 0 that is 10. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10. ओके, देन A12 तो ये हमसे A11 मिलेगा. फिर अगर ये एलिमेंट यूज करें तो देन इट इज A12. तो A12 के लिए अगेन डिलीट द रो एंड द कॉलम. सो यू विल गेट 0 0 4 and 5. तो यहाँ पे क्या है? पूरा कॉलम जो है 0 है. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेट ऑब्वियसली 0. सो A12 इज 0. सिमिलरली A13 तो यहाँ से मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट किया तो हमारे पास क्या है? 0 0 and 2 0. So again you can find what it will be. 0 minus 0 that is equals to 0. Okay, ये हमने रो वाइज फाइंड किया. एलिमेंट should be written as a column wise 10 0 0. Now second, तो सेकेंड रो के लिए वापस से वही काम कर रहे हैं हम. So it is a 1 2 3 0 2 4 and 0 0 5. Second row, first element is 0. Delete the row and the column. तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2 3 0 5. तो 5 2s are 10. 10 minus 0. तो A21 आपको क्या मिल रहा है? 10. So I have written here 10. Okay, minus को हटा देते हैं. तो here 10. Then A22 तो ये वाले एलिमेंट का यूज करेंगे तब हमें A22 मिलेगा. So delete the row and the column. So we get 1 3 0 5. Okay, ये काम आप डायरेक्टली कर सकते हो. So it is 5 minus 0 that is equals to 5. You can see here it is 5. Then A23 तो A23 element 4. So delete the row and the column. What you will get? 1 2 0 0. तो एक पूरी रो 0 आ रही है. That means the multiplication will be 0. So A23 is 0. Now again A31, A32 and A33 मतलब कि लास्ट रो के लिए हमें फाइंड करना है. तो 0 2 4 0 0 5. तो यहाँ से अगर फाइंड करेंगे दिस इज योर A31, A32 and A33. A31 फाइंड करना है. वी विल डिलीट दिस रो कॉलम एंड द रो. राइट, तो हमें क्या मिला है? 2 3 2 4. So 2 4s are 8, 3 2s are 6. 8 minus 6 2. तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा? 2. समझ में आया आपको? A31 it is 2. Now A32 student means row is deleted.
will be 4 minus 0, that is equals to 4. So here we have written 4. Then third element 5. तो ये हमें मिलेगा 8 के 3. Delete the row and the column. So you will get 1 2 0 2. तो ये क्या होगा 2 minus 0. 2 minus 0 that is 2. तो हमने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, बस हमने वो डिटरमिनेंट माइनस फाइंड कर लिया. ओके, इन पर्टिकुलर नाउ यू नो द साइन. कैसे रखना है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस. तो एस 0 के पास अगर प्लस और माइनस लिख रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. इफ द डिजिट इज पॉजिटिव देन नो नीड टू राइट डाउन द प्लस, देन ओनली माइनस विल बी एडेड. So minus 10 and minus 4. So this is your adjoint of A. Now adjoint of A अगर find कर ले, so A inverse is very easy. We can find out as 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो ये क्या होगा 1 upon 10, determinant of A क्या है 10 into the adjoint of A, that is 10 minus 10 2 0 5 4 and 0 0 2. So this is your answer. तो adjoint of A आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हो, बट बी केयरफुल व्हेरेवर यू आर फाइंडिंग डायरेक्टली, बस आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ गड़बड़ ना हो. ओके, एंड साइन चेंज, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइन चेंज. साइन चेंज करने में वहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 9. So student, this is your question number 9. Here A is equals to 2 1 3 4 minus 1 0 and minus 7 2 1. So again the same procedure. First find out the determinant of A. तो determinant of A के लिए हमें क्या करना होगा? You can use any of the row or the column, but we can use where the maximum number of 0 can be there. Okay. तो यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट रो से कर रहा है evaluation, there also no problem with that, but I have used the second row. Okay, I have used this row, second one. So second one में symbol क्या होता है? Minus, plus and minus. So I have written here minus 4. Delete the row and the column. Delete the row and the column. You get 1 3 2 1. Plus minus 1. Delete the row. Delete the column and the row. You get 2 3 minus 7 1. Minus 0. 0 के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Now minus 4. So here you have 1 minus 6 plus minus minus 1 2 plus 21. So here the calculation will give you the determinant of A as minus 3, and minus 3 is a non-zero number, so A inverse exists. As you get the A inverse, so next process is to find adjoint of A. तो adjoint of A मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर यूज डायरेक्टली. तो A11, A12, A13, this is only because you remember the sequence कि रो वाइज फाइंड करना है तो कॉलम वाइज लिखते जाना है. सो A11, A12, A13, then A21, A22 and A23, and then A31, A32 and A33. So let me find out first A11. So here I am finding A11. So I am writing here 2 1 3, then 4 minus 1 and 0, minus 7 2 and 1. So let me find out A11. हो गया A11. So minus minus into 1, that is minus 1 minus 1 minus 0. So answer is minus 1. Then second element, delete this column and this row. So you will get 4 0 minus 7 and 1. So 4 minus 0. So you will get 4. Okay, minus 4 कहाँ से है वो बात देखिए. So here 4. Then third element, that is this one 3. तो इसको अगर डिलीट करें रो एंड कॉलम, so we will get this one 4 minus 1 minus 7 and 2. So 4 3s are 8 minus 7 into minus 1, so this plus 7. So 8 minus 7, that is equals to 1. So last element is 1. Similarly students, आप फाइंड करिए A21, A22 and A23. So A21, A22, A23 के लिए क्या होगा 2 1 3 4 minus 1 and 0 minus 7 2 and 1. So this is your second row. Delete this second row, right?
For A11, for A21 we will do only the first one. So you get 1, 3, 2, 1. 1 minus 6. 1 minus 6 that is equals to minus 5. So here 5. Okay, वहाँ पे हमें actually minus 5 लिखना है, but sign change के साथ वो plus हो जाता है. Then second is a 2, 1, 3, 4 minus 1, 0, minus 7, 2 and 1. Delete the second row and second column. 2, 3 minus 7 and 1. So 2 plus 21, 23. Then delete the third column. So 2, 1 minus 7, 2 2s are 4, 4 plus 7. 4 plus 7 that is 12. Similarly A31, तो ये रहा आपका एलिमेंट A31. Sorry, 7 plus 4 that is 11. So here it is 11. Now A31. So here when I find, so 1 into 0, 0, 0 plus 3. So 3. Similarly A32, 12 and A33 minus 6. That you can find. So here and after like that you have to write down the change the sign. So plus minus plus. तो यहाँ पे आपके पास क्या था plus 4. But as the sign is minus, so now it become minus. Then minus plus minus. तो ये क्या था आपके पास minus 1. This is plus 4. So when you are changing the sign plus minus plus it will be plus 5 and this is minus 11. And then plus minus plus. Okay, so in that way we can change the sign. So this is your adjoint of a matrix. Okay, adjoint of a matrix. So now A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. That is 1 upon minus 3 into adjoint of A. So 1 upon minus 3 can be written as minus 1 upon 3. Okay, this minus you can take inside or not take inside. There is also no problem with that. So this is your answer, A inverse. Okay students, so with this question number 9, I think this clear to you and it is very clear how to find out the inverse of any matrix. Okay, inverse find करने के लिए most important है आपके पास determinant of A check करना. If it is a positive, if it is non-zero, then only inverse exists. Then find out the adjoint of A. Adjoint of A बहुत ध्यान से find करिए तो उसको डायरेक्टली करें. ओके, और अगर किसी को डायरेक्ट नहीं आता है, then we have seen the method how to find out adjoint. A11, A12, A13 सारा separately find करिए and then write down the adjoint of A. Okay, then mistake will be not there. And then find out A inverse. A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. And then you can solve the question. Okay, so this is the answer. Now we are going to discuss question number 11. So let me see that question, student. So student, this is your question number 11. Question number 11 is 100, 0 cos alpha sin alpha, 0 sin alpha and minus cos alpha. So first, obviously our procedure is to find the determinant of A. So here you can see in the first row as well as in the first column, the maximum number of zeros are there. So we can use any of this. So we are using the first row. So 1 in a bracket, delete the row and the column, you get cos alpha and minus cos alpha, minus 0 and plus 0. So here you get minus cos square alpha minus sin square alpha. Minus is common here. So cos square alpha plus sin square alpha, that is minus 1, which is non-zero. So therefore A inverse exists. Now let me find out adjoint of A. So adjoint of A find करने के लिए हमें करना क्या होगा? This is our A only, तो calculate use it directly. तो it is A11. तो हम पहले find करते हैं A11, A12 and A12. So A11 हमें क्या मिला? Minus cos square alpha minus sin square alpha, that is equals to minus 1. Now A12, delete this column and this row, you will get, देखो यहाँ पे 0 0 and minus sin alpha cos alpha. So cross multiplication give you 0. Similarly A13, delete this column and the row, you will get this 2, 0 cos alpha, 0 sin alpha, so it will be 0. Now second, तो second row का हम इधर use कर रहे हैं. So let me start with the second row. So here we have 1 0 0
0 cos alpha, sin alpha, 0 sin alpha and minus cos alpha. Let me use the second row. So this is our second row. Delete the row and the column. So we get 0 0 minus sin alpha and cos alpha. Again one row is 0, so answer is 0. Now A21 के लिए क्या डिलीट करना है? सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम. So you get 1 0 0 and minus cos alpha. So you get multiplication minus cos alpha minus 0. So this is minus cos alpha. Okay students. Then third element is this one. So delete this row and the column. So you will get 1 0 and 0 sin alpha. So you can multiply this. So sin alpha minus 0. Sin alpha minus 0. So it will be sin alpha. Okay students. Now here A23 again let me check this one. Here we have delete this row and the column. So minus sin alpha plus sin alpha. Then A31, so delete this column and the row. Delete this column and the row. We get 0 0 cos alpha and sin alpha. Let me write again the matrix. 1 0 0 0 cos alpha and sin alpha. 0 sin alpha and minus cos alpha. So now A31, delete the row and column. One row is 0, so answer will be 0. A32, delete this row, delete this column and this row. So 1 into sin alpha, that is sin alpha minus 0. Now delete this third row. Okay, third column and third row. So we get 1 into cos alpha. So cos alpha minus 0. So this is not adjoint of A, student. This is only the minus. Still the changes of the signs remain. So minus 1 plus minus. 0 के पास प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं. Minus plus minus. So 0 के साथ मीनिंग नहीं. This is plus, so no need to change. Only here is a minus. Then plus minus and plus. So this is your adjoint of A. You can check here. So minus 1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha 0 minus sin alpha and cos alpha. Now students, this is your adjoint of A. Then what is the inverse? A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो determinant की वैल्यू यहाँ पे रखिए -1. Adjoint of A हमने फाइंड किया हुआ है. Then we are writing here. Now where is a -1 only? So let me take it inside. So we will get here 1 0 0. Okay, -1 अंदर जाएगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी. 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha and minus cos alpha. So this is your matrix A. Okay, verification पूछा नहीं, but they can ask verify that A inverse is equals to A. तो A inverse फाइंड करना होगा आपको. A inverse फाइंड करने के मेथड again we are repeating what we have to do. First find out the determinant of A, show that it is non-zero. If it is non-zero, then only then A inverse exists. Then find out the adjoint of A, then A inverse. Okay students, so with this we stop here. Your today's concept is to find out the inverse of a matrix 2 by 2 and 3 by 3. So please students, this is an important topic. So solve this type of the question. You will find so many examples in your reference book. So solve these questions, how to find out the inverse of a matrix. And I have given 2 questions to you, 8 and 10 for solving. Okay students, so with this we are stopped here. Thank you and have a nice day.